Now let's talk about the MDCAT structure. तो अब ये आपको पता है कि एग्ज़ाम इज़ एन MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर, राइट? इस एग्ज़ाम में कोई SCQ नहीं होते, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसके आंसर्स होते हैं और आपने एक आंसर चूज़ करना होता है. इन ऑल द सब्जेक्ट्स यू विल हैव MCQs, राइट? जिस तरह आपके SCQs आते हैं आपके FSC के एग्ज़ाम में, A लेवल के एग्ज़ाम में, देयर आर नो MCQs. इट्स अ प्योरली MCQ बेस्ड एग्ज़ाम विद अ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग 200. तो पूरे एग्ज़ाम के कितने क्वेश्चंस हैं? 200. ड्यूरेशन इस पूरे इम्तहान की कितनी है? 3.5 आवर्स. दैट मीन्स कि अगर आप एवरेज पे देखें तो आपके पास यू हैव लेस दैन अ मिनट फॉर वन MCQ, राइट? थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द फॉर्मेट इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड MCQ. बैक इन द टाइम ये रिटन भी होता था, लेकिन अब उन लोगों ने शिफ्ट करके इसको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कर दिया. Third important thing is that there's a minimum passing percentage and then there's a merit aggregate. So the minimum passing percentage for medical college admission is 65%. That means you have to score about 130 if you want to pass this exam. On the other hand, there's a minimum passing percentage for the dental colleges is 55%. Sorry, that means that you have to score a minimum of 110 out of 200 if you want to pass this exam. पास करने का मतलब मेरिट नहीं होता, मेरिट तो ऊपर जाके बनता है. अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको मिनिमम इतने मार्क्स लेने हैं. आई होप आई मेकिंग सेंस. अच्छा, अच्छी बात यह है, अगैन बैक इन द टाइम नेगेटिव मार्किंग होती थी, बट अब उन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी एलिमिनेट कर दिया, सो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. ठीक है. अच्छा, अब हम बेसिकली बात करते हैं कि इसका ब्रेक डाउन करते हैं कि इसके सब्जेक्ट्स क्या हैं और उनकी वेटेज क्या है. अब सिंस बिकॉज इट्स अ मेडिकल प्रोफेशन एसोसिएटेड एग्जाम है, तो नेचुरली सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन इसमें बायोलॉजी की आती है. सो बायोलॉजी हैज़ अ टोटल ऑफ 68 MCQs, followed by chemistry and physics, which are both going to include 54 MCQs. English has 18 MCQs, and lastly, logical reasoning is something that they've newly included. It has 6 MCQs. और ये टोटल में ला के आपके कितने होंगे? 200 MCQs. अच्छा, अब इन MCQs की उन्होंने डिविजन कैसे की हुई है? So 20% of the 200 MCQs are going to be easy. 60% are going to be moderate level, ये difficulty level बता रहे, ठीक है? And then 20% are hard. जो 20% easy है ना, this means like they're going to be very basic. Moderate questions on the other hand are also doable questions, right? And the 20% जो कि hard questions हैं, they are going to entail like conceptual thinking, right? वो straight book material नहीं होगा. अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो इन्होंने नीचे लिखी हुई है कि नोट इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन 70% क्वेश्चंस विल बी रिकॉल एंड 30% विल बी एप्लीकेशन. दैट मीन्स 70% आपका प्योर नॉलेज बेस्ड होगा, ठीक है? तो आपका कहीं भी नॉलेज गैप है, आपने उसको ब्रिज करना है. और 30% आपके वो होंगे कि आपने इस नॉलेज को क्वेश्चन में अप्लाई करना है. आपसे सीधा जिसको हम कहते हैं ना रट्टा, वो नहीं पूछेंगे, आपको उसको एप्लीकेशन उसको पूछेंगे. जस्ट अगर एक फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, दैट मीन्स एप्लीकेशन, राइट? सो 30% ऑफ योर पेपर इज बेस्ड ऑन दैट. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट MDCAT इज दैट it's an entrance exam that literally everyone in Pakistan wants to take, right? So हर साल एवरेज 2 लाख बच्चा ये इम्तहान देता है. अब इसमें से पासिंग परसेंटेज जो है, या जितने बच्चे जो पास होते हैं, दैट्स अराउंड एवरेज इज़ अराउंड 68,000, राइट? सो द पासिंग परसेंटेज बिकम्स 35%. जिस तरह हमने पहले बात की थी कि आपको 65% एग्ज़ाम को पास करने के लिए चाहिए अगर आप मेडिकल में जा रहे हैं, या 55% चाहिए अगर आप डेंटल में जा रहे हैं. वो बच्चे जो इम्तहान पास करते हैं उसकी एवरेज इज़ 35%. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आउट ऑफ दैट 35%, only 19,000 seats are available, right? So अगर आप 70,000 बच्चा पास भी हो रहा है, वो सारे जाकर उन सबको सीट नहीं मिलनी. Eventually they're only going to be around 19,922 seats all over Pakistan, ठीक है? सारे provinces included. So the seat percentage becomes 10.2%, which is what makes it very competitive. See, the thing is that it's not difficult clearing the exam. It's just that there's so many students giving it that it becomes very competitive, right? So ये मैंने थोड़ा आपको ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश की है कि एक है पासिंग परसेंटेज एंड देन देयर इज लाइक द सीट्स परसेंटेज ऑफ इवेंचुअली दैट यू मेक इट थ्रू. सो इट्स वेरी competitive in that sense.
All right. Naturally, high MDCAT score की बहुत ही importance है, right? Because it contributes to 50% of your overall merit calculation. जो आपका eventual merit बढ़ता है ना, उसके basically दो components हैं. एक MDCAT exam है और secondly फिर आपकी OA level या फिर FSC metric की percentage बनती है. And 50% of the total aggregate is MDCAT. So if you score high on this exam, obviously आपका total aggregate भी high बनेगा, ठीक है? बाकी जो 50% है उसका ब्रेक डाउन फर्दर इस तरह है कि 40% ऑफ दैट इंटेल्स योर FSC और A levels and 10% ऑफ दैट इंटेल्स योर O levels और मेट्रिक एग्जाम, राइट? सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपका O levels हो चुका है, ठीक है, आपका A levels हो चुका है, हाउ कैन यू डू बेटर नाउ? यू कैन डू बेटर बाई परफॉर्मिंग बेटर इन दिस एग्जाम, राइट? क्योंकि वो एग्जाम तो अब आपके हो चुके हैं. सो नेचुरली इफ़ यू स्कोर हायर ऑन दिस एग्जाम, आपका टोटल एग्रीगेट ज़्यादा बनेगा और आपकी मेरिट सिलेक्शन ज़्यादा होगी. सो इट्स जस्ट हाउ इट गोज़. All right. So now about the MDCAT information in particular. कि इस साल MDCAT कब expected है? Initially पहली न्यूज़ थी कि it's going to be towards the later end of this year, fall में sometime होगा, but अभी recently उन्होंने announce किया है कि it will be conducted on the 27th August of this year, right? So बहुत कम time है इस तरह देखा जाए तो it's very soon, but definitely possible. What is the validity of an MDCAT result? It is valid from 2 years from the date of this exam. तो अगर आप इस साल एग्ज़ाम देते हैं और आपका इस साल सिलेक्शन नहीं होता, नेक्स्ट ईयर भी आप वो स्कोर यूज़ कर सकते हैं. सो वन स्कोर इज़ एक्चुअली वैलिड फॉर 2 years, राइट? एग्ज़ाम रिव्यू प्रोसेस. द एग्ज़ाम रिव्यू इट्स एक्चुअली अवेलेबल फॉर री-टोटलिंग ऑफ द MDCAT स्कोर. लास्टली हम बात करते हैं फ़ी फॉर रिव्यू. तो कैंडिडेट्स को जो भी प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है रिव्यू प्रोसेस का, वो जाहिर सी बात आपको पे करनी पड़ेगी. लाइक कहीं भी रिव्यू पॉलिसी होती है, यू हैव टू पे फॉर दैट. सो हियर एज़ वेल इफ़ यू वांट, अगर आपको लग रहा है कि आपकी टोटलिंग सही नहीं आई, आपका स्कोर ज़्यादा बन रहा है और अभी आपका स्कोर गलत आ रहा है, तो आप उसके लिए आपको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी और आपके री-टोटल हो जाएंगे, ठीक है? So these are just general FAQs about the MDCAT exam. I think next I'm going to give you guys little tips and tricks on how you can help, like how you can navigate through the exam better in the next few slides.